creating array in PHP. So in PHP, array is created using array function. Okay. And as we have already specified, it is only a collection of elements, so we do not specify data type here. So in this array function, you have to pass all the collection of element which you want to store inside the variable. So if particular variable is initialized by this function, so that variable becomes array in PHP. Okay. So let us start practical demonstration. So here I have already created one page, arr.php, and inside this very first we will demonstrate index array, and in this we will demonstrate index one dimensional array. I want to create one dimensional array, so I will just declare a variable x equals to, I will call array function, and inside this function I will pass values. Suppose I want to store 5 integer value in this array, so I will just write 10, 20, 30, 40, 50. So here my array variable is created and initialized with these 4 integer values. If you want to print this x, so as we already know, if you want to just go through an array element, you can use a loop. तो यहाँ पर मैं एक for loop लिख लेता हूँ इसको print करने के लिए. $I is equals to 0, $I less than equals to 4, semicolon $I plus plus. और इसके अंदर हम लोग e को I will print it in, okay, just I will print it in h1 $x, and you have to just use a square bracket here, okay, and you have to specify your index number, that is $I. तो इसको मैं concatenate करता हूँ डॉट से, it will be better, and then this is closing of h1. So remaining syntax is common. जैसे हम C++ के अंदर एरे के वैल्यूज एक्सेस करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग PHP के अंदर भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लोग अगर इंडेक्स नंबर पास कर रहे हो, इट मींस दिस पर्टिकुलर इज अ इंडेक्स एरे. Okay, now save it and we will run this page arr.php. So 10, 20, 30, 40 and 50, all 5 values are printed on the screen. Now in PHP again there is a special function that we can use to print array, and that function is, then it is important function in PHP, print underscore r function is used to print array. तब आप लोगों को पूरा एरे एक ही साथ प्रिंट करना है विदाउट लूप, तो PHP के अंदर ये फंक्शन आप लोगों को यूज करना है, प्रिंट अंडरस्कोर आर. ये सारे के सारे फंक्शन आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं, बिकॉज इन एग्जाम इन मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस the question asked based on this, which function is used to create array in PHP or which function is used to print array in PHP. So you should know these functions. So instead of this loop, now I will print the entire array using function. So what you have to do, you have to write here print underscore r, and here I will print $x. Save. So you can see the output.
when you print particular array using print underscore r function, the output is printed like this. So this is array, this is index number, and this is what arrow operator, and this is value. Again, index number, arrow operator value, index number, array operator value, and so on. Okay, so very simple way of dealing with array. Now let us check creating array with different types of values. तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी पांचों वैल्यूज एक ही टाइप के लिखे थे. अब मैं कुछ अलग अलग टाइप के वैल्यूज के अंदर डाल देता हूँ. जैसे पहले दो वैल्यूज यहाँ पर इंटीजर है, फिर उसके बाद एक फ्लोट वैल्यू डाल देंगे हम यहाँ पर. अगेन वन मोर फ्लोट वैल्यू, देन स्ट्रिंग, and again some integer value. So let us see whether this particular array is printed or not. You can see the array is printed on the screen. There is no error. Why there is no error? Because by default PHP is a loosely type of programming language. Now what is the type of this X? Not integer, not float. So in PHP, as we have seen data types in PHP, and if you remember, तो हम लोगों ने वहां पर एक डेटा टाइप देखा था, दैट इज एरे. ओके, तो ये एक अलग से यहाँ पर डेटा टाइप है, ये एक कलेक्शन है, एंड दिस इज द डेटा टाइप ऑल्सो. ओके, विच इज रिप्रेजेंटिंग दिस एंटायर कलेक्शन. Now we will see one program.